So today we'll see about the crystallization behavior of solid solution. जोटा कि magma ता भीतर solid solution शो करथबो bicomponent magma तार crystallization behavior देखबे. तो जोड़ा यूटेक्टिक रे तुमर देखिलो कि गोटे कंपोनेंट आ गोटे कंपोनेंट सहित मिसिले तार मेल्टिंग टेम्परेचर चेंज हुए बा डिक्रीज करे तो एटी भी सेम कंडीशन अछि सेम प्रिंसिपल अछि but the behavior of the crystallization or path of the crystallization will be different the diagram also different than the eutectic. Solid solution means होजी the component they can mix with each other तो क्या करते हैं mix हे पर थोड़ा phosphorite highlight में पढ़ते हो phosphorite highlight so you can mix them at any proportion ताकि टेक्नोलॉजी proportion में हमें mix करी पाते तो phosphorite रोतला पर कौन क्राइसोलाइट रोतला जोतरे कि तुमे Mg और Fe को एनी प्रोपोर्शन में मिक्स करके यू कैन प्रोड्यूस डिफरेंट कंपोजिशन ताको कुआ जाय सॉलिड सॉल्यूशन ताको हमें आइसोमर्फस सीरीज कहते दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सॉलिड सॉल्यूशन वेयर दे कैन मिक्स विथ ईच अदर एट एनी अमाउंट. तो सॉलिड सॉल्यूशन जेतले दीटा कंपोनेंट मिक्स हो जंती जेतले वी आर कंबाइनिंग मोर फॉस्फेट we are combining phosphorite and hyalite, then it will produce a member in between them. If you are taking suppose 80% of phosphorite 20% of hyalite it will produce chrysolite. It will produce chrysolite. बुझा ना नहीं तुम यदि 40% नौचा कि phosphorite hyalite नौचा 60% से अंश से तांका भीतर गोटे इंटरमीडिएट मेंबर प्रोड्यूस करछ बा गोटे मिनरल प्रोड्यूस करछ बुझा ना नहीं But if you have 50% dioxide, 50% anorthite, last two come dioxide anorthite. They are showing eutectic. If you are taking 50% dioxide, 50% anorthite, then you will get a thing which have 50% dioxide, 50% anorthite. कि तुम्हें गोटे association of dioxide anorthite पाइबो separately. Like तुम्हें क्षीर पानी को मिसेई देले एबा कोन मिक्स हे जिवो तुम्हें कि डाली गोडी मिसेले जेमती अलग अलग रहइबो. Dioxide anorthite is like they will not mix with each other. They will not produce single compound at the end of the crystallization. So जदि dioxide anorthite रे crystallization start होची तो सेतले crystallization करूची last को हम कोन पाउछन dioxide crystal and anorthite crystal last. यदि मु phosphorite hyalite any composition नेली मु नेली 80% phosphorite 20% hyalite then ये crystallization कला last को मते मिलो chrysolite. Chrysolite, not a phosphorite, not hyalite. It is a combination of them. They can mix with each other. They can mix with each other. So, it last to a single compound produce. So, in case of eutectic, last to में dita solid पायो. Lesson entry you will get two solid, and in case of solid solution, you will get one solid. Last to में कौन पायो? गोटे solid पायो. तो से हमें तक देखिया crystallization behavior and phase diagram albite anorthite. So this is the phase diagram of albite anorthite. To take it x रे नीचे में composition, y रे नीचे में temperature. है. तो दीटा लाइन ऐसी वो this line is called as solidus. एटा कहा जाए solidus. आप तो कौन solidus solid पाएगा and this is called liquidus. Above them liquid पाएगा and in between them will be liquid plus solid. So your melting temperature of albite is 1118 or 20 नहीं पाया तुम्हें. Anorthite ends up 1553 for melting temperature. Dita curve रोज इटी liquidus curve below तो तुम्हारा above the liquidus curve में liquid पाएगा melt of albite and anorthite. अब Plagioclase जोटा को लिखा हो जाए solid माने albite और anorthite जो solid produce होगा ताको क्या जाए कौन Plagioclase. And the Plagioclase series is in between albite and anorthite. So now we have taken a composition here on the liquid field at 1600 degree temperature. There are composition अच्छी कितनी चीज़ हमें albite 58 anorthite 42. एमती randomly नहीं है जी किंतु it is तुमको मन रखे सुविधा होगा कि dioxide 58 anorthite 42 होची eutectic compost but this is not a eutectic compost है ना randomly नहीं है जी 58 42
तो अल्बाइट के 58 है, अनर्थाइट है 42. इट इज एट 1600 डिग्री टेम्परेचर. तो सेम जेहेतु तुम प्योर अल्बाइट नहीं कि प्योर अनर्थाइट नहीं, तो प्योर अनर्थाइट 1553 रे क्रिस्टलाइज करता. प्योर जदि अल्बाइट होता 1120 रे करता. पर जेहेतु देयर इज अ मिक्स ऑफ अल्बाइट एंड अनर्थाइट, मिक्सचर ऑफ कौन अल्बाइट एंड अनर्थाइट, तो अकॉर्डिंगली तुम मेल्टिंग टेम्परेचर विल बी लोअर. तो सिंपल ये वर्टिकल फॉल करिवो, जो लिक्विडस को टच करिवो सेटू क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट. जो लिक्विडस को टच करिवो जो यूटेक्टिक रे मोर फास्ट को मेल्ट फील्ड रे थिवो से वर्टिकली फॉल करिवो, जो लिक्विडस को टच करिवो सेटू क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट. एटी भी सिमिलर जिंस, जो लिक्विडस को टच करिवो सेटी का क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो. तो ग्रेजुअली इधर टेम्परेचर तार डिक्रीज करछि है ना. तो 1500 पर्यंत आसला तथापि क्रिस्टलाइज हबो नाही. व्हेन इट विल रीच टू दिस लिक्विडस पॉइंट, एतरे से ए लिक्विडस पॉइंट को टच करिवो. Just before touching the liquidus point, when it will touch this point, then the crystallization will begin. ये कौन प्रोड्यूस करिवो? क्रिस्टल प्रोड्यूस करिवो. कौन प्रोड्यूस करिवो? अल्बाइट नानोथाइट will produce plagioclase. जहाँ भी से सॉलिड प्रोड्यूस करिवो, that contain both albite and anorthite. That contain both albite and anorthite. Only the proportion of albite anorthite determine which mineral will produce. बोला. तो ए जगह रे जहाँ भी सॉलिड प्रोड्यूस हबो, टच कला पर जस्ट तळू तुम सॉलिड पाइबो. धर एटू टच कला एठी तुम क्रिस्टलाइजेशन हेची, जहाँ भी प्रोड्यूस हबो दैट इज प्लाजियोक्लेज. ता कोन कहजो प्लाजियोक्लेज बोली कहजो. काहे कि बिकॉज़ जहाँ सॉलिड प्रोड्यूस हबो इट कंटेन बोथ कैल्शियम एंड सोडियम. जहाँ पर सॉलिड प्रोड्यूस हो कौन थो तारे कैल्शियम और सोडियम मिक्स थी, ताको कहबा हमें प्लाजियोक्लेज. ना एठी तुमे कहि परबेनी कि अनर्थाइट आगे क्रिस्टलाइज करछि कि अल्बाइट आगे क्रिस्टलाइज कर. बोथ साइमल्टेनियसली मिक्स होचंती एंड दे आर प्रोड्यूसिंग प्लाजियोक्लेज. हम प्रोड्यूस करछन प्लाजियोक्लेज प्रोड्यूस करछन. मिक्स रो रीजन होछि कि दे आर शोइंग सॉलिड सॉल्यूशन नेचर. ठीक है. सपोज कि टू एग्जांपल ले आम पाखे गोटे मिक्सचर ऑफ मेल्ट अच्छी, सोडियम अच्छी. ठीक अच्छे. सोडियम अच्छा, कैल्शियम अच्छा, जोटा कि तुम अल्बाइट और अनोथाइट हिसाब से कनसिडर करते. ठीक अच्छे. एमाने जेतेबेले क्रिस्टलाइज हेबे हला, जहाँ से माने सॉलिड प्रोड्यूस करिवे, जहाँ सॉलिड प्रोड्यूस करिवे दैट आल्सो कंटेन बोथ सोडियम एंड कैल्शियम. बोथ सोडियम एंड कैल्शियम. जोटा इन केस ऑफ हमें देखुतले अल्बाइट और अनर्थाइट केस छड़ा सॉरी डाइऑक्साइड अनर्थाइट केस रे डाइऑक्साइड कि अनर्थाइट मेल्ट रे थिला तले माने फास्ट क्रिस्टलाइज करबे. फास्ट से माने डाइऑक्साइड क्रिस्टलाइज करिवे कि अनर्थाइट क्रिस्टलाइज करिवे. रेस्ट ऑफ द मेल्ट रे रहबो कोन डाइऑक्साइड अनर्थाइट मेल्ट रे हला. इति किंतु जहां सॉलिड हबो दैट आल्सो कंटेन सोडियम कैल्शियम. जहां लिक्विड हबो ता धरे भी आल्सो कंटेन सोडियम कैल्शियम. तो जो सॉलिड एथरे होची कि सोडियम कैल्शियम दे कैन रिप्लेस ईच अदर पोजीशन, बस सेडी कपल्ड सब्स्टिट्यूशन देखांते. तो से माने मिक्स हे गोटे कंपाउंड प्रोड्यूस करबे. तो करबे मिक्स हे गोटे कंपाउंड प्रोड्यूस करबे. जहां भी से माने होजन कोन होछ मिक्स हे कि प्रोड्यूस करबे. तो सेति पई जेतले कोनोसी लिक्विड पोर्शन ऑफ द लिक्विड यदि क्रिस्टलाइज करूची इट विल प्रोड्यूस ए सब्सटेंस दैट कंटेन बोथ सोडियम एंड कैल्शियम. लाइक तुमको एमती देखि दे परिबी. तो अल्बाइट रो कंपोजिशन होची कोन NaAlSi3O8 CaAl2Si2O8 एति गेला तमर कोन एटा अल्बाइट एटा अनर्थाइट. तो एमाने जतने मिक्स सॉलिड प्रोड्यूस करछन दे कैन प्रोड्यूस ए कंपाउंड व्हिच हैज कंपोजिशन NaCaAl1 to 2 भीतर रहबा, Si2 to 3 भीतर रहबा, O8 एवला कंपोजिशन गोटे प्रोड्यूस करि पारि.
तो ये तुम्हें धर फास्ट जेतले प्रोड्यूस हबो केते परसेंटेज ऑफ सोडियम रहबो केते परसेंट ऑफ कैल्शियम रहबो से अनुसार से माने कंपाउंड प्रोड्यूस कर हैला जदि तुम्हें नेलो डाइऑक्साइड एनोथाइट केस डाइऑक्साइड होछ ना CmG Si2O6 एनोथाइट होची तो लिख लेबे CaAl2 Si2 वेट ए माने मिक्स हे कंपाउंड प्रोड्यूस कर परिबे लाइक दिस कि तुम्हें गोटे फॉर्मूला लिख दे परिबे जे CaMgAl Si जहा माने मिक्स हे परिबे नाही जते प्रोड्यूस हबो डाइऑक्साइड इज ए इंडिविजुअल क्रिस्टल हबो एनोथाइट इज ए इंडिविजुअल क्रिस्टल हबो सॉलिड हिसाब बट एठी जते अल्बाइट एनोथाइट मेल्टा सॉलिड हबो दे विल प्रोड्यूस अ सिंगल सॉलिड पूरा कोन प्लाजियोक्लेस कोन कह जाय प्लाजियोक्लेस एमती फॉस्फेट हाइलाइट जते क्रिस्टलाइज हेबे दे विल प्रोड्यूस अ मेंबर बिटवीन देम कि क्राइसोलाइट हो हाइलोसेटेट हो हार्टोनोलाइट हो केन से माने मिक्स करि परिबे दे कैन मिक्स विथ ईच अदर तो एठी सेबळा जे कोनोसी सॉलिड तुमरा प्रोड्यूस होउची दे कंटेन बोथ सोडियम मेंबर एंड कैल्शियम मेंबर तामाने एठी हमरा जहां मेल्ट रहिला दैट मेल्ट आल्सो कंटेन अल्बाइट एनोथाइट and the solid contain also albite and anorthite solid रे कोन होछ albite anorthite mixed condition होछ जो plagioclase को मेल रे albite anorthite होछ यूटिलिटी केस रे कोन होतला जते बेला हमर क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होतला दैट विल प्रोड्यूस ओनली डाइऑक्साइड solid and melt contain both dioxide and anorthite तो मेल्ट रे केते डाइऑक्साइड केते anorthite रहला हम केमि जानथले परपेंडिकुलर ड्रॉ करथले इन केस ऑफ यूटिलिटी हम कोन करथले तो हमर एटू इनिशियल कंपोजिशन एटू स्टार्ट हवा जोटी तुमे जानियो चाहो छ लिक्विड कंपोजिशन एमती ड्रॉ करिवो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड 80% ऑफ लिक्विड बल्क कंपोजिशन तुमे जानि पाजो केते सॉलिड केते लिक्विड जो लिक्विड रो कंपोजिशन तुमे केम जानथलो केते डाइऑक्साइड छै केते एनोथाइट छै सॉलिड रो कंपोजिशन केम जानथलो सॉलिड रो कंपोजिशन जाने की आवश्यकता नहीं काहे सॉलिड होचे 100% डाइऑक्साइड तो ताको हम लिख परबो डाइऑक्साइड 100% बट लिक्विड तो हम लिख परबेन सेमती लिक्विड सम अमाउंट ऑफ डाइऑक्साइड सम अमाउंट ऑफ एनोथाइट एठी कहला जो सॉलिड प्रोड्यूस हैला जो सॉलिड प्रोड्यूस हे छिति दैट आल्सो कंटेन अल्बाइट एनोथाइट तादर भी किछि परसेंट कोन थबो अल्बाइट तो किछि परसेंट एनोथाइट थबो जो मेल्ट रहला तादर भी किछि परसेंट अल्बाइट किछि परसेंट एनोथाइट ताला हम केमि जानिया सॉलिड रे सेठी सॉलिड रे असुविधा नथला काहेना सॉलिड होची ओनली डाइऑक्साइड तो एठी सेम कंडीशन लिक्विड ता जो पॉइंट रे थिबो एटू परपेंडिकुलर ड्रॉ करिवो दैट विल गिव द लिक्विड कंपोजिशन ठीक अछि तापर तुमे सेइटू गोटे आइसोथर्म लाइन बा टाई लाइन कोन हैना आइसोथर्म लाइन बा टाई लाइन पैरेलल टू द कंपोजिशन ड्रॉ करिवो से जोठी टच करिवो दैट विल गिव द सॉलिड कंपोजिशन फॉर दिस लिक्विड कंपोजिशन जतले लिक्विड तुमरा ए पॉइंट रे पहुंचीबो देन केते अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रोड्यूस हेइथबो दिस मच एति के सॉलिड प्रोड्यूस हेइथि तमे जतले इनिशियली थिबो लिक्विड ता कोन थिबो 100% थिबो तापर लिक्विड किछि कमिबो लिक्विड किछि कमिले से कम प्रोड्यूस करिवो सॉलिड तो से जो सॉलिड प्रोड्यूस कला से सॉलिड रे केते अल्बाइट केते एनोथाइट रहबे बा केते सोडियम केते कैल्शियम रहबे सेवरा सब एमती ड्रॉ करे तुम ए पॉइंट रे जानियो चाहो तो यू विल ड्रॉ ए आइसोथर्म लाइक दिस so this will give the liquid composition this will give the solid composition of this liquid composition liquid जतले ए जगह रहबो ताले केते सॉलिड से प्रोड्यूस करिवो तुमे जानि तमाने एतले लिक्विड तुमर ए पॉइंट रे पहुंचुची क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होची तुमे ए पॉइंट रे जानियो चाहो छ कि इतकी प्रोग्रेस कला तो लिक्विड किसी लॉस हेतिबो इसटा सॉलिड प्रोड्यूस हेतु तो हम कोन करिया विल ड्रॉ ए टाई लाइन लाइक दिस so if this will give the solid composition से कोन दबो solid composition तो ए जगह रे सेम तो लिक्विड विल प्रोग्रेस ऑन दिस लाइन ए लाइन में लिक्विड धीरे धीरे प्रोग्रेस करियो
until this point reach जेतले ए पॉइंट टा रीच करिवो so it is a solid composition which is same as the liquid composition you have taken जति के liquid composition है सेति solid पाई गले तमरो crystallization सेटु सरी जो मैं इनिशियली जते लिक्विड नियंती जते बेले सेति सॉलिड मिली जाय हमको तो सेतला हमर क्रिस्टलाइजेशन सॉरी तले तुमरो एटू क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हला ए पॉइंट रे कोन हो ए लाइन लिक्विड टा इवॉल्व करिवो until unless it will reach to a composition where it will produce this much amount of solid जोटा कि इनिशियल लिक्विड से तो समान तो जति कि लिक्विड निछले तले सेति कि सॉलिड पाई जीवो तले क्रिस्टलाइजेशन सॉरी जीवो एटी तुम जे कोनसी पॉइंट रे यू कैन कैलकुलेट द सॉलिड लिक्विड कोन सॉलिड लिक्विड परसेंटेज बल्क कंपोजिशन तुम कैलकुलेट कर परिबो तो एती जोड़ा लिक्विड से टच करे से कोन दो सॉलिड जोड़ा सॉलिडस को टच करिवो से दो लिक्विड कंपोजिशन है सो वी हैव हम पाखरे सॉलिड कंपोजिशन थिबो लिक्विड कंपोजिशन थिबो सो ई दिटा कंपोजिशन हम पाखरे प्रेजेंट थिबो एटी हम पाखरे कंपोजिशन थिबो सॉलिड रो एटी हम पाखरे थिबो कोन लिक्विड रो देन इनिशियल कंपोजिशन थिबो देन मेटी कैलकुलेट कर परिबो सॉलिड परसेंटेज एंड लिक्विड परसेंटेज तो ये तुम्हारा क्रिस्टलाइजेशन ऑलवेज प्रोग्रेसेस फ्रॉम कैल्शियम टू एनोथाइट सॉरी कैल्शियम टू अल्बाइट सब बळे कोड आसीबो ए डायरेक्शन रे जीवो सब बळे बुझबैला काना कूलिंग कंडीशन रे सब बळे कोन होबे क्रिस्टलाइजेशन रे सो 1553 रे हाई टेंपरेचर अछि एटा कोन अछि लो टेंपरेचर अछि सब बळे क्रिस्टलाइजेशन एति भई कैल्शियम मेंबर आडू सोडियम मेंबर आडू को सब बळे आसी हैना जे कोनसी केस रे भी तुमर क्रिस्टलाइजेशन हो देखो क्रिस्टलाइजेशन जते प्रोग्रेस करूची तुम एठू स्टार्ट करा को जे कोनसी पॉइंट रो स्टार्ट करा लिक्विड लाइन ने एमटी से प्रोग्रेस करिवो सॉलिड लाइन ने एमटी प्रोग्रेस कर हला सो सब बेले लिक्विड हो कि सॉलिड हो से माने विथ प्रोग्रेसिव क्रिस्टलाइजेशन दे गेट रिचर इन सोडियम परसेंटेज ग्रेजुअली सोडियम परसेंटेज तांगटे बढ़े धीरे बुझला नि सोडियम परसेंटेज का इंक्रीज करिवो जस्ट आर रिवर्स होची इक्विलिब्रियम मेल्टिंग जो बड़ा इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन तार डिटो रिवर्स होची कोन इक्विलिब्रियम मेल्टिंग तो देखो अगर कोई तुम क्रिस्टलाइजेशन विल बिगिन हियर ए जगह क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हबो तो टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग क्रिस्टल जोटा कि दैट कंटेन बोथ अल्बाइट एनाथाइट तो तार कंपोजिशन हम केम जानिबा एटू टाई लाइन ड्रा करबा सी जहा कंपोजिशन दो दैट इज द कंपोजिशन ऑफ सॉलिड एंड दिस इज द कंपोजिशन ऑफ सॉलिड लिक्विड and we can calculate the ball composition के calculate करिया compositional difference नबा एटा होची solid एटा होची liquid तो crystallization एमती प्रोग्रेस करिवो until unless where there is the solid that will form equal as initial liquid composition crystallization सेते पन प्रोग्रेस करिवो जते पन सेही solid composition पाइना जति तमे initial liquid composition जते सेही solid composition पाइ जिवो ताले all the liquid will already used up or exhausted से जगह crystallization end up and solid solution there is no eutectic point and jaha produce karibo it will produce a single solid which is your plagioclase kangan plagioclase so jaha produce karibo uta single solid produce karibo unlike eutectic जोतरे की लास्ट है तमे दीटा सॉलिड को eutectic हमें कम पाउतले दीटा सॉलिड पाउतले ए जगह हम पाया का गोटा है बुझबला